Hello friends, hello students, welcome back. I'm Dr. Atul Kumar and I'll welcoming you to the question and answer session 3 of vector calculus. So in today's video we are going to solve these two problems, and these two problems I have given you as an assignment when we have made the video based on the Green's theorem and divergence theorem. So I am hoping if you are watching this video you have already seen the video related to Green's theorem and divergence theorem. If you have not seen this video, I will give the link in the description box. First you see those videos, on that basis you will find something fruitful in it. So let's solve the problem. So first problem which we are going to solve is Green's theorem first, and then the divergence theorem. One more problem I have given on Stokes theorem, but that problem is actually very lengthy and it will take time to solve it. So obviously that question was based on verifying the Stokes theorem, so you need to verify LHS as well as RHS. So for that problems I will make another video. So let's solve these two questions first. So Green's theorem, you know what type of statement is there in Green's theorem. Green's theorem is of type f1 dx plus f2 dy, line integral of f1 dx plus f2 dy over the curve C equal to surface integral of del f2 by del x minus del f1 by del y multiplied by dx dy. So in some of the books you have seen like m dx plus n dy, so both are same. There is no this is not an issue. If you substitute m is equal to f1 and n is equal to f2, you will have the same equation. Now Stokes theorem, today we are not going to discuss it, and now divergence theorem. I think these two theorem you all know about. So on that basis I will try to solve the problems which I mentioned. So on a quick revision, just remind that Green's theorem and Stokes theorem put up a relation between line and surface integral, okay? And while Green's divergence theorem put up a relation between surface and volume integral. Green's and Stokes theorem have a relation between line and surface integral, while divergence theorem have a relation between surface and volume integral on the basis of divergence and curl, okay? So respectively. So it is also called the Gauss divergence theorem as well, okay? So let's solve this problem. The problem is given using Green's theorem. Evaluate this integral where C is arc of parabola y equal to x square from minus 1 1 to 1 1. So I am going to quick revise it because you have already seen the steps in the previous video. So I am directly doing the process, okay? So your first step was to compare the m dx plus n dy or f1 dx plus f dy, means LHS integral, with the given problem. So you compare this integral with the problem. So you find your first step was to find f1 and f2. So your f1 is, if you compare these two integrals, so your f1 is 1 plus x y square and your f2 is minus x square y, okay? So second step was to compute these partial derivatives, means del f1 over del y and del f2 over del x. So del f1 over del y will be, you tell me, del f1 over del y will be 2xy, okay? 1 is a constant, so it will be 0. Del f2 over del x is minus 2xy, okay? So now third step was to substitute the partial order derivative which we obtained in the Green's theorem. So you need to substitute these two partial derivatives here. So you'll have del f2 over del x is minus 2xy. So you substituted minus 2xy here. Then minus del f1 over del y is 2xy. So minus 2xy, it leads us to the 4 minus 4xy. So fourth step was to focus on the reason. The reason given is arc of an parabola from this to this. So I told you on the fourth step you need to plot the graph. After plotting graph, you can see y equal to x square is this one, and
The point which we here mentioned is minus 1 1 2 1 1. So here it is these 2 points. So I plot a line between these two okay, and between these 2 points. So the step fourth was to find the limit of y in terms of x from the given curves. So given curves is y equal to x square and the line given. So your limit of y will be vary from y equal to x square to y equal to 1. Why? Because lower curve is y equal to x square and upper curve is y equal to 1. So lower limit will be y equal to x square, upper limit will be y equal to 1. So you need to your limit of y is vary from y equal to x square to y equal to 1. Now this step fifth was to find the limit of x now, because you need the limit of x and y here. So limit of x is obviously from the figure you can see that it is vary from minus 1 to 1. One more thing you can do, you just substitute y equal to 1 here, then you will have the value of x. So if you substitute y equal to 1 here in order to satisfy these two equations, so it will be x square equal to 1. Let me write it. Okay, x square is equal to 1. So these two curves are intersecting at x equal to minus 1 and 1, x equal to minus 1 and 1. So limit of x is vary from x equal to minus 1 and 1. So your limit of y is vary from x square to 1, and y limit of x is vary from minus 1 to 1. So limit of y is vary from x square to 1. Why? Because we need the limit of y in terms of x from the figures, from the curves, and the limit of x you will obtain after the intersecting point. Okay, so after getting these two limits, you just substitute these two limit here. So you will have finally you will have this statement, y equal to x square limit from y equal to x square to y equal to 1, and x is vary from minus 1 to 1, and the integrand is minus 4xy. You just, because inner integral is with respect to y, and also y is depending upon x as a limit, so it is useful to integrate with respect to y first. So if we have integrated with respect to y, so it will be y square by 2. So 2 will cancel with it, it will be minus 2. You minus 2 take, you can outside. So you'll have y square and y square by 2. Okay, then you substitute the limit minus 1 to x square. So it will be, I told you to cancel this minus 2, it will be minus 2 here, and it will be 1 by 1 minus x raised to the power 4. So you'll have x 1 minus x raised to the power 4. Then you multiply x inside, so it will be x and x raised to the power 5. Then integrate with respect to x now, because previously you have two integrals, now it is one integral. So x after integrating it, we will have x square by 2 and x raised to the 6 by 6. Just apply the limit minus 1 to 1, because both are even function and you are substituting a and minus a, so it will obviously lead us to 0. So your answer is 0. So इतनी मेहनत की और आंसर क्या निकला? 0. So your second question based on the Green's theorem was covered. Now let's see the problem based on the divergence theorem. This question also I have given you as an assignment. So let's see what it is. So your first step was to write this statement, because it is told you to use the divergence theorem. So this is Gauss divergence theorem. Theorem is written 2 times. Sorry for it. So evaluate double integral f dot dr. F is already given you. S is a surface region bounded by x square plus y square is equal to 4 and z is equal to 0. Z is equal to the similar question I have solved in that video. So, and I have given this problem just to see, but many of the people have not solved this problem. That's why I have to solve this and provide you the solution. Many students have said to provide the solution as well. So your first step was to find f. F is already fortunately given clearly. Now second step was to compute del the divergence of f. The divergence of f will be simply del f1. F1 is here x.
f2 is your minus y, and f3 is z square minus 1. Just substitute f1, f2 and f3 here. So you will have this term. Now if you substitute it with when you partially differentiate with respect to x, you will have 1. Partially differentiate minus y with respect to y, it will be minus 1. And partially differentiate z square minus 1 with respect to z, you will have 2z. So 1 minus 1 plus 2z minus 1 and 1 it get cancelled. So you left with the 2z. So after getting the values of divergence of f, you need to substitute it. But after substituting, we'll focus on fourth step was to focus on the reason. The reason is here. The volume integral is given because you have changed the surface integral into the volume integral. So your step was next step was to find the limit of x, y and z. So first you need to find the limit of z, because limit of z is already given in the reason. So obviously you will see this limit of z is vary from z is equal to 0 to 1. Okay, so z is vary from 0 to 1. There is no doubt. Let's plot the graph as well. So this is your the figure. This is x square plus y square is equal to 4, means the radius is 2 and the center is 0, and this is z axis. So the one plane is z is equal to 0, second plane is z equal to 1. Okay, so your limit of z is vary from 0 to 1, you see. Okay, z is vary from 0 to 1. So you just substitute the limit of z first, then we'll see for x and y. So after you have substituted z is equal to 0 to 1, you just integrate this with respect to z. So it will have 2z square by 2, 2 you can cancel out, z square, and we substitute when 3 is substituted, it will be 9. So I think here, sorry, it should be 1. Here it's a mistake. Just mark it here. It is 1, okay, not 3. So when we substitute 1 here, it will you left with the 1 only. So surface integral of dx and dy, you left with that surface integral of dx and dy. And in the last video, and the problem which I mentioned in the divergence theorem, at the last of the video I have given some of the important statement, like surface integral of dx dy is nothing but area of the surface. The triple integral of dx dy dz corresponds to the volume of the surface, and if double integral of f1 f dx dy, it is also corresponds to the volume under the surface. So these are the things which I have already given you. So on that basis I told you that this is nothing but it is area. Okay, so this is area of the surface. Now what surface is given in a surface? What surface is given? Surface is given x square plus y square is equal to 4, means a circle is given, and the area of circle is pi r square, and r is here 2. Okay, because 2 square means 2. So the area means r means radius is 2. So pi r square means r is 2, will be r square means 2 square, it leads to 4 pi. So your final answer is 4 pi. So you have seen how this video works. So this is complete version of English. Let's make you understand in Hindi as well. इस वीडियो में हमने 2 प्रॉब्लम किए हैं, क्वेश्चन 2 एंड क्वेश्चन 2 बेस्ड ऑन द ग्रीन्स थ्योरम एंड डाइवर्जेंस थ्योरम. सो हम ये 2 क्वेश्चन, मैंने आप लोगों को ये 2 क्वेश्चन एज एन असाइनमेंट दिए थे आप लोगों को करने के लिए. सो कई लोगों ने क्वेश्चन किया है और सही किया है, अप्रिशिएट देम. कुछ लोगों ने बोला था सर प्रोसेस बता दीजिए कैसे होगा, कुछ लोगों से नहीं हुआ, इस वजह से ये क्वेश्चन ग्रीन्स थ्योरम और इन पे मैंने ये वीडियो बनाना मुझे ज़रूरी लगा. सो प्रॉब्लम था आपके पास, आपको ये इंटीग्रेट करना था, इवेलुएट करना था ये इंटीग्रल, और जिसमें सी आपके पास एक पैराबोला दिया है और फ्रॉम पैराबोलिक पे ही जो पॉइंट है -1 1 to 1 1.
सो फर्स्ट स्टेप आपको क्या है कि ग्रीन्स थ्योरम यूज़ करना है, तो ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट लिख ली। उसमें आपको पहले फर्स्ट स्टेप है आपको F1 और F2 निकालना है। F1 F2 निकालने के लिए आपको ये इंटीग्रल जो है, इस जो गिवन इंटीग्रल है इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। सो जो dx का कोफिशिएंट होगा वो F1 होगा, जो dy का कोफिशिएंट होगा वो F2 होगा। सो आपने जब इन दोनों को कंपेयर किया तो F1 आपके पास क्या है 1 + xy² और F2 क्या है -x²y। सो आपके पास F1 और F2 आ गया। अब स्टेटमेंट के हिसाब से आपको क्या निकालना है, del F2 ओवर del x और del F1 ओवर del y। सो आपने ये दो भी कंप्यूट कर लिए। अब इन दोनों को del F1 ओवर del y और del F2 ओवर del x को निकालने के बाद इनको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास ये स्टेटमेंट बना -2xy -2xy, क्योंकि दोनों 2xy और -2xy बने हैं। सो यहाँ पे आपके पास फाइनली -4xy आया। फिर आपके पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, फोर्थ स्टेप हम किस पे फोकस करते हैं, रीजन पे। तो रीजन आपको जो दिया हुआ है एक पैराबोला का आर्क दिया हुआ है जो कि -1 से 1 तक, -1 1 to 1 1 वेरी कर रहा है। तो हमारे जो फोर्थ स्टेप होता है उसमें हम रीजन प्लॉट करते हैं। तो रीजन प्लॉट हमने किया तो हमें मिला जो फोर्थ स्टेप हम क्या करते हैं कि लिमिट ऑफ y निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ x। सो जो भी गिवन कर्व है, जो गिवन कर्व हमें दिया है y = x² दिया हुआ है और दूसरी लिमिट y की दे रखी है y = 1। अगर ध्यान से आप देखो तो हमने यहाँ पे y जो हमारा लोअर लिमिट होगा वो क्या होगा y = x²। क्यों? क्योंकि जो कर्व लोअर कर्व कौन सा है आपके पास y = x² और अपर कर्व जो है y = 1 है, इसीलिए लिमिट y = x² से y = 1 वेरी करेगी। और x की लिमिट कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, -1 से लेकर 1 तक। अगर ऐसे भी नहीं समझ आए तो आप इंटरसेक्शन पॉइंट आप देख लीजिएगा, जस्ट y = 1 सब्सटीट्यूट कर दो इधर। सो x² = +-1 हो जाएगा। तो इससे पता लगेगा x इज़ वेरी फ्रॉम -1 to 1। सो आपके पास x की वैल्यू, y की वैल्यू जो वेरी कर रही है x² से 1 वेरी कर रही है, x की वैल्यू -1 से 1 वेरी कर रही है। इन दोनों को हम यहाँ पे इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं। लेट्स सब्सटीट्यूट इट। सब्सटीट्यूट करने के बाद आपके पास जो टर्म बना वो ये, इसमें आप देखोगे कि इनर इंटीग्रल x² से y है जो कि डिपेंड कर रहा है x² पे, लिमिट भी x² पे डिपेंड कर रहा है। तो ये बहुत आसान हो जाता है आपके लिए कि और यूज़फुल रहेगा कि आप पहले y को ही इंटीग्रेट करो। तो y को इंटीग्रेट किया तो आपके पास आ जाएगा y²/2। y²/2 आने के बाद आप सब्सटीट्यूट करोगे, लिमिट 1 -x⁴ आ जाएगा। ठीक है। सो 1 - x⁴, यहाँ पे 2 है, जस्ट 2 ये 2 से कैंसिल होगा तो इट विल बी -2 और यहाँ x यहाँ पे आ जाएगा 1 - x⁴। आप फिर x यहाँ मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा x और x⁵। सो जब आप x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x²/2 और x⁶/6। अब यहाँ पे आप लिमिट सब्सटीट्यूट करोगे 1 और -1, सो 1/2 -1/6 माइनस आ जाएगा 1/2 + 1/6। सो आपके पास ये दोनों कैंसिल होके आ जाएगा 0। सो योर आंसर इज 0। इतनी मेहनत करने के बाद आपके पास आंसर क्या है, 0। ठीक है। सो इस इंटीग्रल का फाइनल सॉल्यूशन क्या है, 0। ठीक है। सो ये ग्रीन्स थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन था। आप यहाँ देखोगे पहले सरफेस इंटीग्रल था, फिर लाइन इंटीग्रल में चेंज हो गया है। ठीक है। सो आपके पास आंसर है 0। लेट्स सी दी क्वेश्चन बेस्ड ऑन डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस थ्योरम का आप ये स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसमें आपको डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है। तो पहले डाइवर्जेंस थ्योरम का स्टेटमेंट लिख लो। फर्स्ट स्टेप हमेशा आपका क्या होता है, वेक्टर निकालना। तो इसमें f आपको ऑलरेडी गिवन है। सेकेंड स्टेप क्या होता है, आपको इसमें डाइवर्जेंस निकालना है। तो इसका डाइवर्जेंस निकाल लो। डाइवर्जेंस में आप लोग को पता ही क्या है, डेल को डॉट करेगा तो स्केलर टर्म देता है i कैप डॉट i कैप, j कैप डॉट j कैप, k कैप डॉट k कैप। तो आपके पास ये क्या आ गया, डेल x ओवर डेल x। ठीक है। डेल -y ओवर डेल y एंड डेल z² -1 ओवर डेल z। ठीक है। अब आप इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करोगे विद रेस्पेक्ट टू x। सो ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा 2z। सो 1 1 -1 कैंसिल, आपके पास आ गया 2z। तो डाइवर्जेंस ऑफ f आपके पास क्या आ गया, 2z। अब इस 2z को यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में आप सब्सटीट्यूट करोगे तो आपके पास आ जाएगा ये टर्म। ठीक है। अब आप नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि आप रीजन को फोकस करोगे। रीजन में पहले तो आप देखोगे कि z की लिमिट क्या है। z की लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ वेरी कर रही है, 0 to 1। जो भी लिमिट आपको दी हुई, जरूरी नहीं है कि z की लिमिट ही हो। लास्ट वीडियो में भी मैंने आप लोगों को वीडियो बताया था जब मैं डाइवर्जेंस थ्योरम के प्रॉब्लम कर रहा था।
ठीक है। सो z की वैल्यू 0 to 1 वेरी कर रही है, 0 to 1 हमने सब्सटीट्यूट कर दिया, आप फिगर से भी देख सकते हो z इज इक्वल टू 0 to 1 वेरी कर रही है। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 स्क्वायर है सर्कल, और z इज़ वेरी फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। सो z इज इक्वल टू 0 to 1 पहले इसमें सब्सटीट्यूट कर देता ताकि ट्रिपल इंटीग्रल जो है वो डबल इंटीग्रल में चेंज हो जाए, 3 वेरिएबल 2 वेरिएबल में चेंज हो जाए। तो आपने जब इसको सब्सटीट्यूट किया 0 to 1, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 2 z स्क्वायर बाई 2, जब आप डिफरेंश इंटीग्रेट करोगे विद रेस्पेक्ट टू z स्क्वायर बाई 2, क्योंकि लिमिट आपने z की लगाई है। सो यहाँ से 2 कैंसिल, और यहाँ पे गलत लिखा है, यहाँ पे 1 आएगा। सो लिमिट आप सब्सटीट्यूट करोगे तो ये आ जाएगा 1। सो सिंपली आपके पास क्या बन गया है, डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy। सो लास्ट वीडियो में आप लोगों को मैंने बताया था कि डबल इंटीग्रल ऑफ dx dy क्या होता है, एरिया ऑफ द सरफेस। ट्रिपल इंटीग्रल ऑफ dx dy dz क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द सरफेस। लाइन इंटीग्रल ऑफ, अगर मैं f1 dx लिखूं वेयर f1 इज ग्रेटर देन, तो वो भी एरिया अंडर द कर्व देता है। ये सब चीज़ें मैं आपको डिस्क्रिप्शन दे चुका हूँ, ठीक है। और सरफेस आपके पास क्या है, एरिया ऑफ द सरफेस बोला है, तो इसका कंप्लीट इंटीग्रल क्या होगा, एरिया ऑफ द सरफेस। और सरफेस आपके पास क्या दिया है, सर्कल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, क्योंकि लिमिट ऑफ z ऑलरेडी हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, तो हमारे पास केवल एक प्लेन आया है जो कि एक सर्कल बता रहा है। तो वो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सो पाई आर स्क्वायर, आर इज हियर 2, ठीक है। सो पाई आर स्क्वायर सब्सटीट्यूट किया, हमारे पास क्या आ गया, 4 पाई। सो कंप्लीट आंसर आपका हो गया 4 पाई। सो ये आपका कंप्लीट हुआ वीडियो यहाँ पे। सो मैंने आप लोगों को हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश आई एक्सप्लेन, जो आपको सही लगे वो आप फॉलो करो। सो अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, प्रेस द बेल आइकन। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में पॉसिबली हम लोग स्टॉक्स का जो प्रॉब्लम है वो देख सकते हैं, जो वेरीफाइड स्टॉक्स थ्योरम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। ये जो प्रॉब्लम आज 2 कराए हैं ये भी एग्जाम में आए हुए हैं, और पॉसिबली 1-2 क्वेश्चन पेपर होगा, वो मैं देख लूँगा, अगर वो हो सकेगा तो नेक्स्ट वीडियो में वो करा देंगे। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे एट होम, थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।